important is your brand for you? How important is your brand for you? Brand can be your company's name, your own name, right? So I see it is less important. I still like to see a raise of hand. It is important, right? Perfect. So now, brand warfare. That's the name of our masterclass. How to make competitors fear your existence. What we learn, I'll once again repeat for all of you, how to build a brand that commands attention and respect. Now when we say respect, which all brands do you think of? Nike, Apple, Coca-Cola, Apple, Tata, right? Respect, I said. All right. Strategies to outshine and outmaneuver your competitors. The psychology behind powerful brand positioning. How to create fearless, unforgettable marketing campaigns. My friends, let's join our hands to welcome Mr. Mohit Sharma, founder of Blacklisted, marketing disruptor, storytelling genius, who has helped brands carve their niche and dominate their industries. As the CEO and co-founder of Blacklisted, Mr. Mohit has worked with top businesses to build powerful brand identities, create bold marketing strategies, and execute disruptive campaigns that make competitors take notice. You can take notice by the name itself, Blacklisted. His expertise lies in psychological branding, guerrilla marketing, and brand positioning, making him a sought-after leader in the world of branding warfare. So, Mr. Mohit, I would welcome you on the stage. First of all, I welcome everyone. It's really good to see everyone. Can you hear me? So today we are here together to understand some logics related to branding. So first of all, I would like to know how many of you are running a company, running a brand. So can you please raise your hands? Nice, perfect. How many of you are students right now? One, two. Okay, that's good, that's good. How many of you are freelancers? Perfect, that's great. Nice. All right, so today I have gathered some points based on my experiences. I'm working in the industry from 10 to 15 years approximately. In this particular tenure, I have served a lot of clients nationwide, outside of India also, apart the continents also. So we're gonna come down to small little things. And you must be noticing, I have divided this particular session into 3 parts. So here's part A, part B, part C. So we will do some activities later on, but I would just want to make you understand that this is part A. When I talk about this one, this is part B, this is part C. All right. So first of all, I would like to introduce myself. My name is Mohit Sharma. I'm the founder of Blacklisted, the creative head at Blacklisted also. So this is a creative-driven advertising, marketing, branding agency where we serve our clients with whatever it is required to make a brand online. So I believe before initiating any masterclass, I would like to tell you what I'm all about, what I have done, my achievements, so that you can have an idea who's in front of you, what I'm about to say. Yes, please. This is fine now? All right, thank you very much. I'm sorry. So to understand about me, first of all, I would like to take you to my website right away. I have a dedicated page about myself. Just a second, I think I need to. All right. So this is our website. So I carry experience of 15 years. I've worked on a lot of projects, around 350 projects, different segments, different verticals. And I've been awarded, till date, 5 awards only. I'm Meta certified also. I have been Behance Adobe Artist of the Day for a couple of times.
So I started my journey from AnyMaster. AnyMaster is an educational training institute in New Delhi. Over there, I was a 3D faculty. Then I switched to Maya Mac Academy. It is one of the recognized particular, training institute for animation, VFX, and all. Then I started my journey as an assistant professor at Chandigarh University. 4 साल के लिए मैंने as assistant professor पढ़ाया वहाँ पे. I taught a lot of subjects: VFX, 3D, graphics, photography, videography. उस टाइम पे यूनिवर्सिटी वाज टेकिंग द शेप. पहले चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कड़ुआ होता था, यू मस्ट नो. 2010 में 2011 में यूनिवर्सिटी बनी. तो जब ये यूनिवर्सिटी बनी, देन टीचर्स ज़्यादा नहीं थे. मोर ओवर फिल्म मेकिंग मल्टीमीडिया के इस पर्टिकुलर रीजन में इतने ज़्यादा टीचर्स नहीं होते. सो दैट्स व्हाई दे आस्क्ड मी, दे आस्क्ड लॉट ऑफ पीपल to raise hands कि कोई 3D पढ़ा सकता है, कोई फोटोग्राफी पढ़ा सकता है. And I was always in front, on the front row, कि मैं ये करवाऊंगा, मैं ये करवाऊंगा. And this particular tenure of my as assistant professor at Chandigarh University, 4 साल में मैंने काफ़ी subjects को take over किया. After that, I started working with an organization, you must know, Miss India in New Delhi. For a couple of years, I served them as a photographer, videographer. And they saw some potential in me and they hired me as a consultant. So they asked me कि जितने भी हमारे sponsors हैं उस particular pageants के या fashion show के, उनकी requirements को gather करो, understand what they want from us. एक fashion show में, let's say if there is a technology partner, let's say Vodafone या Nokia या Hitachi as a technology partner, उनको क्या हम serve कर सकते हैं, किस हिसाब से serve कर सकते हैं. While working in those particular metro cities, I came to know a lot of things about branding. For example, if I'm Hitachi, I'm putting some money on a pageant show. Let's say मैंने 10-20 लाख या 30 लाख की स्पॉन्सरशिप दी उनको. उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, रेवेन्यू जनरेशन की तरफ कैसे जाना है, how they want to make a name on digital world, in a physical world, billboards कैसे होनी चाहिए, advertisements कैसे होनी चाहिए, radio jingles कैसे होने चाहिए, newspaper में ad कैसे आनी चाहिए, a lot of requirements for them. So serving them for a couple of years, I learned a lot, and after that, lockdown happens. सब घर पे बैठ गए. जितना भी कुछ मैंने किया हुआ था, I thought now this is the time कि सब कुछ funnel down करें. And then in 2021 I started this agency called Blacklist. It's entirely totally different name. इस तरह के नाम करना थोड़ा complicated था. कई लोगों ने मुझे बोला नहीं चलेगी, हो ही नहीं सकता, लोग विश्वास नहीं करेंगे. मुझे भी थोड़ा सा रियलाइज हुआ जब SBI ने मना कर दिया कि आपका खाता नहीं हो सकता. जैसे मैं गया वहाँ पे, कहते जी, मैं कहा जी नाम है Blacklisted. कहते जी फिर आप हमारे पास क्यों करने हैं, आप किसी लीगल को पकड़ो ना. मैं कहा सर नाम ही है Blacklisted. And it took me around, let's say, 6 months. काफी मेल्स की back and forth. तब जाके I got this name registered, and now this is trademarked also. So this is my professional journey. क्या-क्या चीजें की हैं मैंने. But I would like to tell you, उससे पहले मैं क्या कर रहा था, just a second. So I was an artist for a lot of celebrities. I did digital art, I did paintings. This is handmade. हाथ से बनाई है. उस टाइम पे मेरे पास एक बैककॉम की टैबलेट होती थी. But I used to draw from the paper first. उसके बाद, I served a lot of clients in Bollywood also. So as you can see, this is uploaded also on Jimmy Shergill के page पे है ये. Then I worked for Kapil Sharma. This is again a digital painting. I can show you the progress. So this is the way I did the Chirag. इस तरह से ideology बनाई थोड़ी सी. I worked for Sunny Leone also for the digital art I made. As you can see here. उस टाइम पे कुछ recognized work हो गए थे because I'm the generation जिसने जो Orkut पे friend request भेजता था, right? So कईयों को पता नहीं होगा I think Orkut के बारे में. So we used to work on Orkut, friends बनाने वहाँ पे, शरारतें करनी and artworks upload करने. So these are the digital paintings. Then I was hired by Hitachi Australia to do a creative art for their power tools. Then I was hired by Diljit Dosanjh also. I did this particular poster for GOAT. यहाँ पे कहीं मैंने नाम लिखना सोचा अपना कि मोहित नाम लिख देते हैं, किसी को पता नहीं लगेगा. But still I thought यार क्यों ना डेट ही वो डाल दे जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है, 28/8/1987. So pretty recognized work. I got the photograph. Until date I have served a lot of clients in Bollywood for digital art, for creative arts also. And after learning all those things, after doing all those things, I jumped into direction. I did complete music videos with a lot of people. Did pretty good in that one also. So these are all videos done by me in this particular region, Punjabi industry, great industry in fact. Then in 2022 something, I got a call from Basha for this particular project, Jugnu. आप सबने सुना ही होगा गाना.
pretty popular song. And if you scroll down to the description, you can see a set sequence blacklisted Mohit Sharma. So ये मेरी डिमांड थी कि यार कहीं नाम भी डाल देना आने वाले टाइम पे ब्रांडिंग करनी होती. So they utilized. After this, I got a call from Wagner Music. They are the one with whom I did this song. Aastha Gill ka song hai, Balmain. So I'm showing you right now different things. You must have seen website में लिखा हुआ website बनाते हैं. मैं बोल रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग करते हैं. मैं आपको बता रहा हूँ मैंने as a VFX artist काम किया हुआ है, directions की हुई हैं. In this particular tenure of my professional life, सबसे ज़्यादा मुझे help की college ने when I was teaching a lot of subjects. When I know the subject, then I know I can get it done. And working for the students, उनके लिए assignments बनाना, उनके लिए lectures बनाना, it was pretty easy down there. So I just wanted to show you what I do. So now let's jump onto the master class right away. All right. Okay. So today's agenda. थोड़ा सा मैं clear कर देता हूँ what we're going to learn today. We're going to learn about perception, positioning, strategy, execution, and war tactics. War जैसे word अच्छे लगते हैं, नाम ही blacklisted है, तो थोड़ा सा ideology भी वैसी चलती है कि how we can be different in the game. किस हिसाब से हम दूसरे brands को पीछे कर सकते हैं. So we start with one universal question. Do you think you have a brand? So I want this to be a little interactive. आप लोग हाथ खड़े करके जवाब दे सकते हैं. A lot of you just raised hand जब आपने कहा कि आप कंपनी चला रहे हैं, फर्म चला रहे हैं. तो मैं सबसे पहले पूछूंगा, do you think you have a brand? Can you? Yes sir, please, can you explain how you think you have a brand? Well, because my name stands out. It's something which we've been able to actually achieve over the last 19 years as a brand in hospitality called the Kikar Lodge. And that is what is actually standing out. It sounds different, like this. Anyone else? Yes, ma'am. Let me come. First of all, hello everyone. Am I audible? It's okay, I don't need mic. Am I audible now? No. Use this one, please. Audible? So I'm representing SEO Discovery here. And पहली बात तो अगर SEO Discovery की बात करें तो it's a brand. SEO नाम में आगे. And we are a digital marketing agency. तो आई फील कि जैसे आपने बोला कि ब्लैक लिस्टेड, आप एकदम से ही माइंड में हिट होता है कि ओके ब्लैक लिस्टेड व्हाट इज दिस एंड एवरीथिंग, माइंड में क्यूरियोसिटी आती है. तो एसईओ डिस्कवरी जैसे ही बोला मैंने तो पता चल गया लोगों को कि हाँ वी आर डूइंग एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज. सो दैट्स हाउ आई वुड से कि वी आर डूइंग. Anyone else? Yes sir. Yeah. Yeah, thank you. So myself, Karamveer Rajpal. So there's a metaphor known as STEM education. So I represent Neonex team. So actually we are the first company itself in India where the science, technology, engineering, arts and this mathematics combination plays a vital role. With the combination of Industry 4.0, जिसमें कि हम incubation, center of excellence and maker spaces, we are doing some good job. Thank you. Okay, so let's begin. So let me go ahead and share some minutes. So see, people know brand right now, it's a logo or it's a website or it's a social media post. Right? I'm facing a lot of clients. Requirements आती हैं, ये चाहिए, brand बनाना है जी, फटे चकने, इतना करना, उतना करना, अद्ध चीज बनानी है, this and that goes on regular basis. But I believe if they tell you your brand is a logo or website or some nice social media post, it's wrong. That's decoration, that's not branding. That's brand identity, that's not a branding. So now let's move ahead. There's one more definition. Most people think branding is all about colors, fonts and identity. It is cute, it is for sure cute, it is required.
But if your brand doesn't punch people in the face with its presence, you don't have a brand. You have a hobby. We as entrepreneurs, as a company owner, as a firm owner, we are very peculiar about, हमें डिज़ाइनर से क्या चाहिए, किस तरह का डिज़ाइन चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, थोड़ा लोगो ऊपर कर दो, थोड़ा लोगो नीचे कर दो. I would say that's a hobby. आपका शौक है ये करना, but that never counts into a branding. So अगली स्लाइड पे जाने से पहले I will jump on to some origin of branding. ये branding शुरू कहाँ से? What was the reason this particular word की requirement हुई in the market? So I did a lot of research here and there, and I came across branding शुरू हुई इन लोगों के कारण. You can see, ये reason है जिनके कारण branding market में launch हुई, शुरुआत हुई. In reality, I'm not kidding. In reality, yeah. So हुआ क्या? विपिन जी सर हैं यहाँ पे, तो मैं सर के साथ थोड़ी डिस्कशन करता हूँ. मैं और विपिन जी सर आज से 1000 साल पहले गायें चराते थे, राइट? बकरियां थी, भेड़े थी. मस्ट बी ट्रू, ऑफ कोर्स, मस्ट बी ट्रू. रिश्तेदारी इनकी पुरानी या फिर गवांडी होंगे. सो वी यूज्ड टू डू दिस. होता क्या था, ये वाली गाय मेरी गाय विपिन जीत सर के घर चली गई, बिकॉज वी कैन नॉट आइडेंटिफाई. हम उनको ना डिवाइड नहीं कर सकते कि सर ये मेरी भैंस है और आपकी भैंस है, ये मेरी बकरी है और आपकी बकरी है. इट्स इम्पॉसिबल. और उसका रिजल्ट क्या आ रहा था, ये चल मार रहे थे बड़े खुश ऑलवेज. उधर सरदार जी के घर अच्छा चारा मिल रहा है, शर्मे के घर अच्छा चारा नहीं मिल रहा. दिस इज व्हाट वाज गोइंग ऑन ऑन रेगुलर बेसिस. और ये रियल फोटो है, एआई से नहीं है. बाकी इनके दांत इस तरह दिखने शुरू हो गए थे. देन व्हाट हैपेंड, हम दोनों में लड़ाई होने लगी, सिर फाड़ने लगे एक दूसरे के कि भाई मेरी गाय है, मैंने आपको बताया. ये कह रहे नहीं मेरी गाय है, मैंने आपको बताया. देन वी केम विद अ सॉल्यूशन, the origin. The word branding comes from Old Norse. It's a language basically, not Germanic language. The word is brander. It means to burn. Branding का word brander से start हुआ. Brander अब क्या होता था? But what was the word brander? ये different language थी, आजकल नहीं बोली जाती. 800,000 साल पहले की बात है ये. It meant आपने अपने livestock में गाय भैंसों को निशान लगाने. सो गरम हॉट रॉड की जाती थी और निशान लगाया जाता था. और उस टाइम पे ब्रांडिंग का मतलब ये होता था कि दिस इज ब्रांडर, दिस इज माई ब्रांडर. तेरा ब्रांडर नहीं है, मेरी गाय है. बट राइट नाउ दिस पर्टिकुलर एज, मेरा ब्रांड सबका ब्रांड होना चाहिए. सो हियर्स अ फोटो फ्रॉम 1910. सो पीपल यूज्ड टू डू दिस. अभी भी करते हैं. आजकल थोड़ा हाईटेक आ गया, कान पे लगा देते हैं, टैगिंग होती है, दिस एंड दैट. बट फ्रॉम हियर द पर्टिकुलर वर्ड ब्रांडिंग केम इनटू इट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से ओरिजिन हुआ इस चीज़ का. एंड आजकल की अगर बात करें, बट आई हैव सीन दीस डेज जितना भी अग्रेशन लाइव स्टॉक में है, मेरे हिसाब से इसीलिए बिकॉज उनको तंग बहुत किया था हम लोगों ने. यू कैन सी आई एम फ्रॉम लुधियाना, वहाँ पे रोज कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है. कोई ना कोई गाय भैंस गुस्सी होती है. आई यूज्ड टू आस्क माय पेरेंट्स, चक्कर इनकी प्रॉब्लम क्या है यार. देन नाउ आई केम टू नो आफ्टर डूइंग ऑल दिस ब्रांडिंग थिंग, दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड इट. ये चीज़ बहुत बढ़ गई है. एक तो यंगस्टर्स भी आ रहे हैं मार्केट में, प्लीज मेक श्योर तो आप ध्यान रखें. Okay, so let's go to, this was the fun part. Now, let's discuss why branding. Now, if you Google on internet, you will see branding is required to make a brand, to tell a story. Company की personality होती है, value propositions are there, to develop trust, loyalty, different show करना है, awareness है, impact industry also, sales है, पैसा कमाना है, branding चाहिए, branding चाहिए, branding चाहिए. But where it says, what are the principles? किस हिसाब से ब्रांड, हाउ टू टेल अ स्टोरी, राइट? कंपनी की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, वैल्यू प्रोपोजिशन कैसे होने चाहिए, हाउ टू डेवलप ट्रस्ट, द लॉयल्टी, हाउ टू शो डिफरेंस, हाउ टू अवेयर योर टारगेट ग्रुप और टारगेट ऑडियंस, एंड हाउ टू इम्पैक्ट द इंडस्ट्री. Now that's why, for this particular reason, we all are here to understand what things we need to do with our brand, or right now in the process of being a brand, so that we can impact in the industry. So I call this the stubborn theory. मेरे हिसाब से, as per my experience, जिद्दी लोगों के काम है ब्रांड बनाना, हट्टी अड़ियल लोगों के काम है ब्रांड बनाना. It's a long process. You cannot make a brand within the span of 1 or 2 years or 3 or 5 years. It takes at least 10 years. एक recognition पाने के लिए, एक लेवल पे पहुंचने के लिए. So जिद्दी बंदे का काम. आपने जिद छोड़ दी, ब्रांड खत्म हो गया. अब जिद किस तरह की चाहिए? Let's jump into that. So the theory says
Building a brand means fighting every day. You rely on supply chains, your employees, team members, clients, technology. Everything is out of control. AI के बाद तो सबको पता लग ही गया होगा. Everything is out of control. But the only thing you control is how hard you push the brand. That's where most businesses fail to be a brand. They stop pushing. अब किस चीज़ पे push करना चाहिए? Move ahead with that. So अब मैं थोड़ी सी एक्टिविटी करूँगा आपके साथ. सबके हाथ में पेन, notebooks हैं. I will ask some questions on the projector. मुझे जवाब नहीं चाहिए उसके because we have a lot of people are there. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा. So questions are there, but I just want everyone to write it down. अपने पेपर कॉपी पैक कर लिखें. अपने पास रखें. The first question is, what are 3 things you consistently invest into the growth of your brand? What are the 3 things you are doing in a consistent way, every day, every week, or every month to grow your brand? Yes, sir. Yeah. Team of scaling is important with the adherence with the goals and the roadmap. So please write it down. So this is the audit basically, and you will be auditing yourself automatically. Another question, should I move ahead? All right, so another question is, when was the last time you did something bold enough to make people remember your brand? जवाब लिखिए please. You need to write it, then थोड़ा हम अच्छे से आगे बढ़ेंगे. And the last question is, if you stop pushing your brand today, how long before people forget you? So I agree you are pushing your brand. You're doing A, B, C things. मैं बोलूँगा नहीं अभी, आगे जाके डिस्कस करेंगे. But please write these things down. If you stop pushing your brand today, how long before people forget you? If you stop doing all the activities for your brand, कितनी देर में लोग आपको भूल जाएंगे? What do you think? कि लोगों के माइंड में रिकॉल करने बाकी महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए. Yeah, yes. All right, so let's go. Now, if your answers made you uncomfortable, that's good. You need some work to do. अगर आप सोच नहीं पा रहे थे इनके बारे में, माइंड थोड़ा क्लॉटेड था कि क्या लिखें, क्या होना चाहिए, कब हम ब्रांडिंग के बारे में काम कर रहे थे, कब रोके और कितनी देर तक हमें लोग याद रखेंगे. It means you need to work on your brand. It is very important because if you have no clear idea about your brand, then how come other people can have an idea about your brand? So moving ahead, one more exercise I will do here. If my brand could speak, it would say, you need to fill in the blanks. आप एक बार आगे लिखिए उसके बाद. If my brand could speak, it would say dash. Please write it down. If you want time, 15-20 सेकंड और लगा लेते. There's one more question then. What my audience actually here is. 2 different questions हैं. आपस में कोई लिंक नहीं है. दोनों के जवाब सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं. So the first thing is, if my brand could speak, what it would say, brand is an entity, right? It's a single person, we can say. Brand अपने बारे में भी काफी चीजें बताता है. What it would say, and what my audience actually hears. So you have a lot of testimonials, you have a lot of feedback from people, and what do you think? कि जो बंदा मेरे ब्रांड के बारे में जान रहा है, सुन रहा है, वो क्या सोच रहा होगा, क्या बोल रहा होगा? Should I move ahead? Should I? If these 2 columns don't match, you don't have a brand. You just have a business. अगर ये दोनों चीजें मैच नहीं हो रही हैं, तो जो आप सुनाना चाहते हो और जो ऑडियंस बताना चाहती है, it's not matching at all. There is a conflict. There is something that needs to be fixed right away. किन लोगों के जवाब कंफर्टेबल थे? मेरे हाथ खड़े करते हैं. Nice. हाफ. किन के जवाब अनकंफर्टेबल थे? Okay. Perfect. ठीक है, आगे करते हैं सारा सवाल. One more question, last question. It's the million dollar decision, very important question. Now, we are all in a competition, right? मेरा brand है IT company. We're doing these XYZ services. मोहाली में 10,000 कंपनीज हैं. XYZ services, same, सारी चीज़ें. अमन सर बैठे हैं. He owns Fima Carlo Fratini. It's an Italian brand. There are other brands also जो Italian wear बेच रहे हैं या फिर कुछ उस तरह के प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं. Now the question is,
If your biggest competitor raised $1 million to destroy you, what would they target first? Please write it down. Please write it down. If your competitor, आपका कोई competitor, करुण कश्मीरी सर का YouTube का चैनल है, बहुत सारे YouTube चैनल्स हैं, बहुत सारे कंपटीशन में लोग प्ले कर रहे हैं. अगर उस बंदे के पास $1 million है to invest and to destroy you, वो किस चीज़ को टारगेट करेगा? Where they will, particularly specifically point, कहाँ वो पिन मारेंगे? Please write it down. These answers are for you basically. आप जवाब आपके लिए हैं. इतनी ऑडियंस में मैं सुनूंगा नहीं ज़्यादा. जी please. Question, I think question is wrong. Because somebody has time to target you. Because they are building their own brand. आते हैं इस पॉइंट पे. मैं कंसीडर कर रहा हूँ आपका क्वेश्चन. Being Hindu, हमने जो सिखाया कि संस्कार दिए हैं, अपने काम पे ध्यान दो. हमने तो नहीं करना. आगे बात करते हैं. अच्छा क्वेश्चन है. हाँ जी. Anyone? Yeah, sorry. Nice, very good. Yeah. So there are two aspects. First is the negative ORM, and second is the trade secrets and trade practices. Very good. Why of moonlighting, something that kind of aspect. Very valid जवाब. ORM reputation खराब करके आगे निकलना. तो a lot of company do it. Apple कर रहा है, Samsung कर रहा है. Features के बारे में बात हो रही है. अगर मैं indirectly बता रहा हूँ कि मेरी सिक्योरिटी डिवाइस मेरे डिवाइस की सिक्योरिटी अच्छी है, इट मीन्स दूसरों की अच्छी नहीं है. इनडायरेक्टली लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं. सो राइट, कीप दीज आंसर्स विद यू ओनली. नाउ वी गोना मूव अहेड. ये सब कुछ मैं बाद में आपके सामने दोबारा लेके आऊँगा. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मूविंग अहेड, नाउ वी आर जंपिंग इनटू पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस, पर्टिकुलर डिस्कशन अबाउट द ब्रांडिंग. बट मैं एक चीज़ थोड़ी क्लियर करना चाह रहा हूँ सबसे पहले. वी नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिटवीन कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट. दो चीज़ें हैं मार्केट में. एक होती है ब्रांड की मार्केटिंग करना, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू मार्केट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. होली आ रही है, दिवाली आ रही है, आई नीड टू डू सम मार्केटिंग फॉर दैट. एंड एक चीज़ होती है ब्रांडिंग करना. ये दोनों चीज़ें आपस में कोरिलेट करेंगी. Once we move ahead. So first of all, let's discuss cost. It's an expense that ends, right? एक फिक्स कॉस्ट होती है हर एक चीज़ की. इतना खर्चा करना है भाई, टाइकोन का इवेंट हो रहा है, ब्लैकलिस्ट ने भी 2 स्टॉक्स लगाए, इतना खर्चा है. It ends, right? Cost is what you lose. Something you pay for brings customer today. Cost is rely on discount and promotion, and it fights for attention. Now, what is investment? Investment is, it's an asset that grows. What you gain is an investment. Something that pays you back, तभी हम investment करते हैं. Property ले लिया, बाकी चीजें. But in terms of branding, this particular correlates and resonates, keeps customer forever, builds customer loyalty on market perception. अब ये सारे particular pointers with the god-like brands like Apple हम right away compare कर सकते हैं. कि Apple के users ज़्यादातर Apple use करते हैं, 100 में से 1, 2, 3 switch होंगे. Rest of them definitely will keep on using Apple because the loyalty is there, customers are forever. They own the market perception, something that pays you back in terms of whatever kind of utilizations you are doing. These two things, based on my experience in this particular region, India की अगर बात करें, दोनों चीज़ें हैं जो क्लाइंट हमारे सामने लेके आते हैं. जब भी हम कभी ब्रांडिंग की बात करते हैं विद क्लाइंट, देखिए यार बड़ी कॉस्ट है यार 2.5 लाख खर्चा नहीं हो सकता, टू मच यार, इतना ही बनेगा. बट what I'm trying to pitch or what the requirement is for the client, it's about the investment, it's not about the cost. अगर हमारे बच्चे हैं, let's say अपनी बेटी को, अपने बेटे को, if you are putting them in a school जहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई है, it's not a cost. You can never say भी इतना खर्चा आ रहा है तेरी पढ़ाई में. You will always say this is an investment for the bachelors, for the masters, so that they can be someone and then they can pay you back or they can pay themselves back. So it's an investment. In the terms of branding, in the terms of brand development, you have to keep always in mind whatever activities, whatever things, whatever efforts you are about to put on your brand, it's an investment. We never run a campaign for branding. Campaign चलाई जाती है marketing करने के लिए. कोई tool है, कोई चीज़ें हैं, weather के season में umbrella बेचना है, that's marketing. But we cannot correlate marketing with branding. So let's move ahead now. Now from here, I'll dig in deep into our particular master class. This would be the topic for branding. The topic is brain on
pairing. Pairing बहुत important है. What is pairing? See, Apple Watch कितने के पास है? Please raise your hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6. आपको पता है उसके अलग कंपनीज के स्ट्रैप्स भी आते हैं. एप्पल के तो आते ही आते हैं 25-25 हज़ार रुपए की, बट बाकी कंपनी के स्ट्रैप भी आते हैं. So one company that is into straps only, they are pairing their straps with Apple. In same way, down the road, if you want to make your brand, you need to learn the pairing. अब pairing के बारे में सीखते हैं. Now we will study the psychological effect of pairing. Let's say a baby is born. बच्चा पैदा हुआ, खुशियाँ हुई, खुसरे आ गई, तालियां मार के चले. But coming to the point, जब एक बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले उसकी pairing होती है with the name and mom and dad, right? एक पहचान मिलनी शुरू होती है. The concept is we always pair ourselves or something with something. दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो individually अपने आप को क्लियर कर सके, context क्लियर कर सके. You need to do the pairing always. So, और क्या-क्या चीज़ों में एक बच्चा पेयर होता है? जब वो बड़ा हो रहा है या फिर जैसे उसकी लाइफ जा रही है, बिल्कुल brother, sister, caste system, society, right? Guardians, dresses, clothes, yes. Friends, for sure. Discipline, rituals, country, obviously, कहाँ गए आप? Nature, religion, upbringing में बंदा पेयर होता है. Language, most important. Pairing हो रही है और भी चीज़ों की, I'm not sure. Dignity, क्या-क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे? Food is there, weather is there, glory is there, emotions are there. You will see gender is there, drinks are there, conduct is there, education is there. Now you can see a lot of things are being paired up. हमारी आइडेंटिटी किसी न किसी चीज़ के साथ ही है और हमेशा रहेगी जो मर्जी करो. जितना भी आप कोशिश कर लो, you need to be combined with someone to gain authority, to gain a presence, to gain some identity also in the market. For example, अमन सर की कंपनी है. It's an Italian bathware, Italian bath fittings. Now we have done a pairing here. सर ने एक pairing की हुई है वहाँ पे. Italian word is there because Italian सुनते ही सबके माइंड में 100 चीज़ें आ जाएंगी. बढ़िया क्वालिटी है, मॉडर्न है, एस्थेटिक्स, डिजाइन्स बहुत अच्छे होंगे. There is a pairing right away. So in same way, humans जब भी हम आते हैं दुनिया में, हमारी day one से pairing स्टार्ट हो जाती है. And from there, our ideology works in a way we need to respect that particular pairing. धर्म के नाम पे बहुत युद्ध होते हैं, लोग पेयरिंग कर रहे हैं. पॉलिटिक्स के नाम पे बहुत युद्ध होते हैं, लोग पेयरिंग कर रहे हैं. अभी महाकुंभ की मैं बात करूँ, मेरा भी एक रिश्तेदार मिला, मुझे पूछा, कहता कि यार तू महाकुंभ नहीं गया? मैं कहा नहीं यार, जहाँ तू बंदा ही नहीं रहा. मैं यार मैं जा नहीं पाया काम से, जहाँ तू बंदा ही नहीं रहा. मैंने 2-3 बार समझाया, मैं क्या मेरे को काम सी लोड सी काम बहुत है, बस pretty occupied, जहाँ तू बंदा ही नहीं रहा. मैं वाइफ को मैं 10,000 में बंदा है यार, मैं बंदा नहीं है. अगर मैं नहीं चाह रहा बिकॉज ही वांट टू मेक एन अथॉरिटी इन फ्रंट ऑफ मी. नो, इस हिसाब से चलते हैं. उसने अपनी अथॉरिटी बनाई है. I'm a businessman, वो जॉब कर रहा है, रोज निकाला जाता है. नो, हाउ ही कैन मेक द अथॉरिटी राइट? वो आके कहेगा, आंधे सारी बोलेगा, बोल कितना बढ़िया. तो क्या यार महाकुंभ right away he saw me wearing this watch, that watch, this and way, I'm dressing, English बोल रहा है, ये वो. Now he needs to make an authority. Now same thing happens when you talk to someone who is carrying an Android and someone who is carrying an Apple. बंदे वहाँ पे authority बनाते हैं. मुझे यार तेरे को पता है Apple कितना चलता है. I purchased an Apple. मेरा Samsung का phone टूट गया था. I bought an Apple after like 10 to 15 years. And even my team members are telling, sir आपको चलाना नहीं आता. Apple चलता कैसे? Because they are representing Apple. They are pairing themselves with Apple. In same way, there are tons of examples in this particular vicinity, in this particular world, where we are justifying our thought process, what we think, by pairing us with something else. हम अपने रिश्तेदारों को भी पेयर करते हैं. मैं एक एग्जांपल और देता हूँ. My mom bought a toothpaste, पतंजलि का दंत कांति, right? She bought it, लाके रखा घर पे. मम्मी यार कोलगेट यूज करती थी, तेरे को पता है.
ये जड़ी चीज़ें तात्तों होंगे ना उनके ना बने मैं कहा अच्छा तो मैं आपको किसने बताया कहते मनु पता ना मैं कहता मेरे 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 डैडी यूज़ करते थे और मेरे नाना जी यूज़ करते थे उनकी फैमिली में लोग यूज़ करते थे ऐसा ठीक है बट आई थिंक ओल्डर तेन नहीं पता शी इज़ मेकिंग एन अथॉरिटी शी इज़ पेयरिंग हर सेल्फ विद द ट्रेडिशन with the upbringing, with something that I'm not able to understand. And she wants kind of, let's say, positively, she wants to make an authority in front of me कि मन्नू पता है तेनू नहीं पता ये टूथपेस्ट कितना है. So while developing a brand, while moving ahead, we always need to take care of one thing. We have to pair it. बिना पेयरिंग के ब्रांड बन ही नहीं सकता. आगे हम डिस्कस करेंगे किस हिसाब से ब्रांड्स ने कहाँ लॉजिकली किए हैं. Now I really want जब जैसे हमारी ये सेशन चल रहा है ना, you also try to pair your brand with something, any entity, any religion, any logic, any certification. Can be. कोई दवाइयाँ आती हैं डॉक्टर अप्रूव्ड है ये है वैसे है. सी पतंजलि इट्स पेयर्ड विद रामदेव राइट. बिना रामदेव के तो ब्रांड चल ही नहीं सकता था. हजारों ब्रांड्स आते हैं मैंने पता नहीं कितने ब्रांड्स की वेबसाइट बना दी है बट रामदेव के कारण द ब्रांड जस्ट शूटेड अप बिकॉज देयर इज अ पेयरिंग. अब रामदेव ने किसके साथ पेयरिंग की? उसने योगा के साथ पेयरिंग की. बिना योगा के वो सिखाता क्या बताता है? देयर इज नथिंग टू टेल. सारे गुरु हैं सारे धार्मिक हैं. मुझे 10-15 मंत्र आते हैं कर्ण सर को भी आते होंगे सभी उस हिसाब से वी आर वेल मैच्योर्ड इनफ to have a presence in the market, but we need a pairing to prove ourselves. Now let's go ahead. Now what is pairing? This is something you guys need to do for sure. Brand pairing is the intentional association of a brand with an external personality, emotion, culture, or ideology to shape perception, enhance desirability, and strengthen recall. आपने वो देखा होगा YouTube पे ना फ्लैट अर्थ के बारे में बड़े सारे डिबेट्स चलते हैं. इट्स एन आइडियोलॉजी. किसी फलाने बंदे ने कभी ये चीज़ बोली तो लोग उसको लेके चल रहे हैं. लोग कह रहे हैं यार दिस इज द थिंग ऐसे ही होता है बाकी सारे बेवकूफ़ है जी मैं सही हूँ बिकॉज 2000 साल पहले किसने ये तथ्य दिए थे. बट दैट्स नॉट द लॉजिक. एट द एंड ऑफ द डे वी नो बट दे आर ट्राइंग टू प्रूव देमसेल्फ. कम्युनिटीज लाइक LGBT की बात करें किसी भी चीज़ की बात करें दे आर पेयरिंग देमसेल्फ. यूनिवर्सिटीज़ NAAC A+++. We have seen that, right? जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी लवली यूनिवर्सिटी पेयरिंग देम विद समथिंग दैट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द मार्केट जिसकी सर्टिफिकेशंस आती हैं. जब मैं माया अकेडमी पढ़ रहा था मैं गया मैं कहा जी 10वीं मतलब क्या पढ़ाओगे? कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट मिलेगा जी. मैं पढ़ाओगे क्या? कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट मिलेगा. दे आर पेयरिंग देमसेल्व्स. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वी हैव टू डू द पेयरिंग नाउ बिकॉज why the pairing is required because this is the fact. Every story needs a hero. The hero can be culture, the hero can be person, it can be personality, it can be any country, it can be anything. Humanity में भी बात होती है. दया भावना पे भी पेयरिंग की जाती है. अभी देख लो IIT बाबा का भी ऑल नो किस हिसाब से पेयरिंग की जा रही है. IIT के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में बड़े इस चीज़ के इशू हैं या इसको कैसे सॉल्व करें बिकॉज देयर इज समथिंग दैट इज बीइंग पेयर्ड अप. Now वो it is favoring a brand IIT or not favoring, it's a separate issue, but there is a pairing. Now let's discuss what kind of pairings are there. There are n numbers of pairing, but we'll discuss a few. I have a table here. So there is a celebrity pairing. I'm wearing Jordans, right? Michael Jordan, everyone know. मुझे basketball का शौक था when I was in college, in university. I was doing a lot of things, and who's the one I should follow? Obviously, Michael Jordan or someone who's there, who's making a very good score with a person with a very good statistics. I'm following the person. So there's a cultural pairing. Gucci and Italian luxury. Let's say Firma Garlo Fratini with Italian luxury. It's a pair, right? Then luxury pairing is always there. Louis Vuitton, Paris Fashion Week. They do the pairing. Eco pairing है. Tesla, renewable energy. अब टेस्ला की अगर बात करें इट्स अ कार, इट्स इलेक्ट्रिक कार. पहले भी थी. इट्स नॉट लाइक ही इवॉल्व दैट पर्टिकुलर ब्रांड. पहले भी चीज़ें चलती थी बट द वे ही पेयर्ड द टेस्ला विद हिज नेम विद PayPal with all the particular brands he's running successfully, it turned out real good. But the best pairing he did is this is on renewable energy. This is something जो environment का फायदा करेगा. Now there is an emotional connect to that, right? हम धुआं देखते हैं चढ़ जाते हैं but there is an emotional connect to that. So they did the pairing here. Their technology pairing. Apple is pairing themselves always with minimalistic design, with the security thing, with data use नहीं होगा, चोरी नहीं होगा. हमें भी पता है iOS 14 आने के बाद they said privacy बनी रहेगी.
right? But हमें पता है हमारी कितनी privacy बनी हुई है. Everyone knows everything is being tracked. Even if you tap on, ask not to pay or not to track or something like this. But at the end of the day, that's the selling point. The music you're hearing, Beats by Dr. Dre, everyone knows the particular headphones, right? They paired it up with hip-hop artist, Dr. Dre, Grammy Award winner, well recognized, Still Dre, all these particular songs we asked that sunte aa rahe hain, and it gave them authority to face the crowd because Dr. Dre का नाम जुड़ा हुआ था साथ. So this is something I wanted to discuss why brand pairing is critical. आज नहीं तो कल, if you're not pairing yourself, you need to do it right away to gain some trust. How you will learn that? Any questions for now? You can interrupt me anytime. कभी भी आप बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं. Do not keep questions in mind. जितने ज़्यादा हम डिस्कस करें उतना अच्छा. McDonald's basically there's Big Mac in America, right? USA में Big Mac आता है. अब Big Mac यहाँ नहीं चल रहा था. They paired it with Hindi, Maharaja Mac, right? हम लोग सब जानते हैं. We go to McD and there is Maharaja Mac. And Maharaja is a word that they paired to sell their product. बिना उसके बात नहीं बनती. Yeah, I've been to McDonald's a lot of time. मैं कहता Maharaja Mac चाहिए. Because the word is good. मोटू Mac नहीं कह सकते वो. बड़ा होता है. They will यार ठीक है. There needs to be some strategy also कि किस word के साथ pairing है. Alright. So let's do a little exercise here. Let's try pairing. Katrina Kaif. सब जानते हैं? सब जानते हैं? आप खड़े करें प्लीज. अच्छी बात है. So Katrina Kaif. Vicky Kaushal. Definitely, बिल्कुल सही. She's bold, right? कल्याण ज्वेलर के साथ है. Now why I'm going to discuss Kalyan Jeweler, Bollywood, even family-oriented, beautiful, movies में universal appeal, stylish, pan-India acceptance, tall. Now, why I have noted all these particular points? Because when I was working with some big conglomerates, MNCs, they always discuss, यार मान गई 10 लाख में आ जाएगी, but करें क्या? How to make a strategy? A strategy always started with pairing. Pair करो जी बंदे को किसी के साथ. So how to do the pairing? The process. You need to understand what kind of person it is, or what kind of topic it is. जिस भी चीज़ के साथ आप pair करना चाहते हो, you have to think about it. And now, Katrina Kaif is being paired with all these particular brands. Now let's discuss. Luxury pairing. You must have seen in Lux perfumes, Titan Raga watches. में आपने देखा होगा. Mass market pairing is there, Kalyan Jeweler. She connects with everyday Indian consumer while keeping aspirational values intact. Beauty and wellness pairing, of course, L'Oreal, Nykaa is there. Fitness and health pairing is there because body अच्छी है, she's taking care of herself. So why not to put some brands right across her like Reebok and sugar-free cream. Then tech and lifestyle pairing है Xiaomi India. Cultural pairing है again with Nakshatra Diamonds. At the end of the day ऐसा नहीं है. You can just pair one entity with just one brand. Now this is one entity, Katrina Kaif. She's paired with many brands for particular context, for particular target group, for particular audience, even the particular price cap. कोई सामान सस्ता है, कोई महंगा है. For example, slice के साथ pairing है. Kalyan Jeweler, obviously jewelry, everyone is not buying every day. But at the end of the day, 20 रुपए की bottle है slice की. So they made an advertisement, they made a strategy where they linked her with Slice so that they can reach out to mass people. Now, this is where I want a little assistance of my team members. So Preeti, can you please come? Can you please put the products here? Now, this is the reason why I have 3 rows. I want everyone to please concentrate. मैं यहाँ पे सिर्फ भाषण नहीं दूंगा, मैं आपको एक ब्रांड भी बना के दिखाऊंगा. We will discuss one by one how we can make a brand. So team A is here, team B is here, and team C is here. So I have 3 toothpastes. Okay, so let's do the branding now. So in front of you, I want everyone to look at these particular 3 products. We have 3 toothpaste right now. This is for team A,
The second one is for team B, and the third one is for team C. So पहले वाले टूथपेस्ट के बारे में बात करते हैं. 3 कंपनीज है, राइट? 3 कंपनीज came to us. हम सबके पास है. We will take piece of the pie. सब पैसे कमाएंगे. तीनों कंपनी ने आके कहा, अलग अलग कंपनी है. एक कह दीजिए मैंने आयुर्वेदा बेस्ड टूथपेस्ट लॉन्च करना है. One came into play and they said celebrity endorsed टूथपेस्ट लॉन्च कर रहा है. जी मैं रिश्तेदार हूँ जी सेलिब्रिटी का, एंड मैंने जी टूथपेस्ट बनाना उसके नाम पे. And the third one came into play, doctor approved toothpaste launch कर रहा है. Colors are defined by myself, obviously right away. जो सत्ता के अंदर स्क्रीन में डाल रहे हैं. So you can see 3 toothpaste. I want everyone to write it down. Sir, please write Ayurveda based. You guys please write celebrity endorsed, and please write doctor approved toothpaste. Now pairing के बारे में हमने डिस्कशन की. We discussed a few pointers. I will take 1 minute gap only here. आप लोग अपने हिसाब से एक आयुर्वेदा बेस्ड टूथपेस्ट कैसे पेयर हो सकता है, सेलिब्रिटी बेस्ड टूथपेस्ट कैसे पेयर हो सकता है, एंड डॉक्टर अप्रूव टूथपेस्ट कैसे पेयर हो सकता है, प्लीज लिखिए. लेट्स डू सम एक्टिविटी सर. प्लीज राइट इट डाउन. कि आप आयुर्वेदा का प्रोडक्ट कैसे बेचोगे, टूथपेस्ट है, आप लोग कैसे सेल करोगे, आप कैसे सेल करोगे. फिर मैं आगे चलूँगा. 30 seconds more. जो खड़े हैं वो भी प्लीज दे can do the thing. Satinder sir, please, you can write something. Done? हो भी गया? ब्रांड बना लेनी जल्दी. हो गया क्या? तो इन्वेस्टर में उधर चलते ना, इन्वेस्टमेंट लेते जाके. चलो हम जस्ट के लिए आगे चलते हैं. So now, first thing we need to understand. Now, these are the particular principles. Brand positioning, value proposition, the things I discussed earlier. But I just wanted to give, some broader picture with some examples rather than, just reading a PPT. That's why I curated these particular activities. So, brand, team A, can anyone please tell how to do the pairing? क्या लिखे यहाँ पे? Yes sir. Ingredients. जी. Eco-friendly. बिल्कुल. सदगुरु की फोटो लगा दो, बात बन गई. वेरी गुड. सीधी बात ना बकवास, राइट? वेरी गुड. लॉन्चिंग महाकुंभ अगेन वेरी गुड थिंग. पॉसिबल, यस. अच्छा, एनीथिंग एल्स? पीछे बंदे खड़े. शिवम जी, एनीथिंग? Maybe we can add a letter of Sanskrit or Hindi in their name. Very good, perfect. So see, forest spiritual लगा सकते हैं. जड़ी बूटी टाइप स्मेल. See what you guys are doing right now. You are pairing. ये जो भी चीजें आपके माइंड में आ रही हैं, because this is the way. That's why मैंने एक छोटा सा बच्चा शो किया था. हाँ, AI में बना हुआ, मैक्स नाम कह देते हैं. But that's why मैंने वो शो किया था, so that you guys can understand कि पेयरिंग से ही दुनिया चलती है. तो अदरवाइज पेयरिंग के बिना कुछ है नहीं. राजमा के साथ चावल ही है, चावल के लिए खा लिया था. जो राजमा ही के लिए खाने का तरी ना दे दो. We are always trying to pair. हाँ जी, सेंटर में चलते हैं. Luxury. Good smile. Madhuri Dixit. Good smile. Madhuri Dixit. Akshay I Kumar. never compromise with fitness, that's why I never compromise with people. See, very good. Deepika Padukone has a good smile. बिल्कुल. हाँ जी. वो वाले जीत रहे हैं अभी थोड़ा सा. Feeling of luxury, like some stylish. हाँ जी, दिग्विजय सर. Whiteness and clarity. Freshness, shine, Yes. नहीं सर, आप दूसरे नहीं सर. camera confident, High pricing. High pricing. वाह, विशाल जी क्या. camera confident smile, energy, Camera confident smile. Very good, very good. जी. All right. इधर चलो. Yes sir, please. Medical, doctor approved. Doctor. Kind of, brand this is. जी. For sensitive need. बिल्कुल. Doctor photo. Please whitening. जी, बिल्कुल. हाँ जी. Add a blue color. Nice. TGI doctor photo. हाँ जी सर. certified,
Dentist collaboration, very good. Eco-friendly packaging, yes, for sure. Doctor photo. TGI doctor photo. very Narendra sir ने बहुत अच्छा जवाब दिया जी. Answer. Health centric. Health centric. Anything else? Sensitivity, obviously, there is someone who will help you out in this team B. So see what you guys just did. In the index, in the first slide, I mentioned we will discuss the perception. This is your perception already. If you understand how I want to link something, you can work on your brand. Now these particular bullet points, let's say, or features, or whatever things we just discussed, these are popping in your mind. Did you guys did any research for toothpaste? किसी ने कोई पढ़ के तो नहीं आया, but right away you are pairing. For example, if I'm a brand, मैं आयुर्वेदा का brand हूँ, मैं right away pairing शुरू करूँगा with the same kind of technology. Here, जी sir. सबसे costly इसमें pairing celebrity वाली होगी. बिल्कुल. Celebrity को लेके आना पड़ेगा. For sure, बिल्कुल लेके आना पड़ेगा. So see, you guys are developing a brand right away. So yes sir. Anything sir else? Okay, thank you. Okay, yeah, please. Pairing is basically, in a way, marketing. Sorry? No. Come to the point. See, some of people here, they gave an example. For example, I'm not able to recall right now, but they give an example that is relating to marketing. But while making a brand, you have to keep this thing also in mind. कि marketing कैसे करनी है आगे जाके. Branding strategies are there. We'll discuss in detail. अभी मैं strategies ही discuss करूँगा. But you have to keep this in mind also. कि down the road you have to market it. नहीं तो आधी पकी हुई खिचड़ी बन जाएगी, स्वाद नहीं आएगी. So we have to keep these things in mind also. जैसे किकर लॉज सर का ब्रांड है, so किकर का मतलब ही दरख्त है ना. He is pairing it up already सबके ब्रांड पेड़ है, कहीं ना कहीं पेड़ है. But still, if you understand in a better way, you will put more emphasis on that. You will put more efforts on that, so that people can recognize you at the end of the day. So let's move ahead. So कुछ points हैं जो आप लोगों ने बोले, health conscious है, tradition focus है, nature lovers, so trend followers, youth market, aspirational buyers. So I'm talking about brand positioning right now. So this is brand positioning. We have to put our product in front of X amount of people, let's say a group, ताकि हम उनको बेच सकें, right? Every product is not for everyone at the end of the day. There is a particular, audience for that. So doctor, approved toothpaste, people facing dental issues, professionals who are well, versed with the kind of, things or ingredients that might be in there, people who trust doctors over ads. कई लोग हैं जो डॉक्टर के हिसाब से, Sensodyne, you must have seen the advertisement. डॉक्टर्स नहीं बनाई थी, वाइट कलर के कपड़े पे सारे मॉडल्स ये 10-15-20 अच्छा है. They did the particular advertisement and people bought it. प्रोडक्ट भी अच्छा है, ऐसा नहीं है बेवकूफ़ ने आया, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है. So now, brand positioning में, now I will now put some name onto it. So मैं इसको दंत आयुर नाम दे सकता हूँ, बिल्कुल. क्या मैं इसको स्टार स्माइल नाम दे सकता हूँ, राइट? क्या मैं इसको मेडिडेंट नाम दे सकता हूँ? So this is again a particular aspect in marketing, in branding, developing the strategies or naming the brand. You have to correlate the things. I chose blacklisted because I wanted to be, I want the things to be in a different manner. I chose blacklisted because I want the attention, and we are a creative agency, so I just wanted कि थोड़ा सा creative नाम हो. वो अलग बात है, मैंने ज़्यादा creative कर लिया, चलो चलता है, अच्छी बात है. Okay, let's move ahead now. So next point is these three particular things. If I combine these pointers and your pointers, heritage and natural care is the, let's say, plus minus kind of context we can give. Star Smile, lifestyle and brand driven. Medident, obviously science and trust based. Trust क्यों कहा? Because it's doctors, पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी बहुत पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स भी पढ़े लिखे हैं, but we always trust them, what to eat, what to not to eat, medicines, this and that, क्या खाना चाहिए, everything. So trust based is always there. So now we work on value proposition. Why should someone pick this over others? A lot of you already gave the 100% concrete replies. Let's say 5,000 years of Ayurvedic wisdom in every brush. 5,000 साल पुराना है जी आयुर्वेदा. अगर आप
रामदेव के बहुत पुराने ना लाइक जो उनके योग हो रहे थे, he always used to give this particular point. ये प्राणायाम है, this is the process, ये इतने साल पहले था, वेदों में है, पुराणों में है, किताबों में लिखा गया है, ये रिसर्च की गई है 5000 साल पहले, 2000 साल पहले, यही चलता रहता है. Because they are using these words because they want to prove an authority. ताकि आप लोग विश्वास कर लें. जैसे मैंने आपको वो धर्म वाला एग्जाम्पल दिया कि तुम महाकुंभ नहीं किया, अब मैं उसको चैलेंज नहीं कर सकता, राइट? यू कैन नॉट चैलेंज साधुस गुरुस, यू कैन नॉट चैलेंज 5000 साल पहले क्या हुआ, कोई ट्रिब्यून नहीं थी, कोई एचटी नहीं थी, कोई स्कोप नहीं था, कोई ललन टॉप नहीं था कि हमें कहाँ से प्रूफ मिलेगा. सो इसे अच्छा यार हुआ होगा यार, ठीक है. सो दिस इज द वे they put the brand in front of you, putting you at a place where you have to admit हाँ यार you are right, let's move ahead. Then why should someone pick this? Get the superstar smile. Now, India is a Bollywood-driven country. सीधी सी बात बताऊँ, मेरे फूफड़ जी अगर आ जाए ना टूथपेस्ट लेके, मैं कभी नहीं विश्वास करूँ, मैं मानना ही नहीं, ठीक है. वो जब मैं पहली हाथ दिलाता हूँ कहते हैं नीचे तक ला, नीचे तक ला. दिस इज द काइंड ऑफ फूफड़ जी आई हैव. तो आई एम लाइक नहीं यार. बट अगर अक्षय कुमार, यस व्हाई नॉट, मैं यूज करके देते अक्षय कुमार ऐड दे रहा है इस चीज़ की. द परसेप्शन इज देयर. The branding position is in a way where I am understanding the value of the particular brand and the face that I am looking. And moreover, I am pairing myself. Again, I am repeating, I am pairing myself with Akshay Kumar. Now let's move ahead. This particular last one. Clinically proven, obviously dentist recommended. Again, this is a value proposition. जब advertisement बनती है, जब branding की strategies बनती हैं, जब marketing exercise होती है, because we have to keep everything in mind from the day one. इस particular ad में अगर मैं अक्षय कुमार को ले आऊँ, नहीं बात बनने वाली. पीपल विल डिस्कनेक्ट विद दिस थिंग. आज से कई साल पहले ना मैगी ने ना कुछ डिफरेंट फ्लेवर्स निकाले थे एंड वो सारा ब्रांड जीरो हो गया था बिकॉज लोगों का एक ट्रस्ट बना हुआ था. पीपल वर लाइक यार दिस इज मैगी. देन दे इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी टू प्रिपेयर सम एडवर्टाइजमेंट, लोगों को दोबारा बताने के लिए फिर वही मैगी, फिर वही स्वाद, फिर वही सब कुछ, बिकॉज दे डिस्कनेक्टेड देमसेल्फ with these particular entities. So now let's move ahead. अब like Kanika said, थोड़ा बहुत colors या थोड़ी बहुत चीजें और भी होती हैं. So I just added some fonts into it. Dantayur, someone talked about this thing here. I think कि थोड़ा कुछ ऐसा होना चाहिए. Sharp smile, तीखे corners, as you can see. I'm putting some linear things right there. Meditate, simple, sleek, पतले fonts. I made these particular labels, for example. Now this falls into the gamut of brand identity. So we are choosing earthy colors. That's why अगर आप देखोगे, I have that particular brown color. अगर मैं उसको लाल कलर में कर दूंगा, लोग they will disconnect. लोग कहेंगे यार ये लाल रंग था, कितना आयुर्वेद आ गया यार. अगर हमारे वेद पुराण अगर देखोगे, वो किताबों के टेक्सचर सब कुछ वैसे था. उस टाइम भी डिजाइनर्स थे, उस टाइम बहुत अच्छे लोग थे जिसको बना सकते थे. But still at the end of the day, they chose what people perceive. Because coming to the point, जो मेरे बच्चे की फोटो दिखाई थी स्टार्टिंग में, everything is being paired up the day we born. जब से हम शुरू हुए इस particular word. Now, bold and flashy design, obviously we need to have it, otherwise लोग disconnect हो जाएंगे. Minimalist, medical style branding, white होना चाहिए. White color is always correlates medical science, dentist, or let's say surgeons and people like that. Now, whatever I'm doing right now is just the tip of the iceberg. I'm talking about right now brand identity, but game सारी उसके नीचे चलती है. The strategies. Now we're gonna work on brand strategies. Strategies किस हिसाब से होती हैं, क्यों होती हैं, what are the logics behind it? Any question? Anyone? Should I move ahead? Now, strategies समझने से पहले, here I think you said this is marketing and this is branding. For sure, I also explained in the beginning. दोनों चीजें अलग-अलग हैं. But while making the brand, you have to keep in mind. आपको याद रखना पड़ेगा कि after 2 years or 1 year after you're done with the production, product packaging, this and that, you have to now market. एक ही चीज बचेगी, marketing करना. If you need to go for the sales, if you need to go for the branding, then you can skip the marketing part. Anyway, so marketing and branding. दो अलग-अलग चीजें हैं क्या या दोनों सेम हैं? Let's discuss. So marketing is transactional relationship. Brings customer today. Ad चलाओ जी मेटा पे, आज फोन आ जाएगा.
rely on discount and promotion. Offer है जी, होली ऑफर है, फलानी ऑफर है, टिमका ऑफर है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, 10% ले लो, 5% ले लो, BOGO है, buy one get one. That is marketing. Question is solved in marketing. You have a question, it's solved. Funnel is there always for the lead generation. See, चाहे marketing करें, चाहे branding करें, obviously we need the things to generate revenue, right? Brand तो पैसों के लिए बनाना ना at the end of the day. We don't want कि हमें नोबेल पुरस्कार मिले, फलाने मिले, ब्लैक लिस्टेड का आविष्कार किया, ये हो गया, वो हो गया, और मुझे संबोधित किया जा रहा है, सरों पे बोए जा रहे हैं. No, at the end of the day, I need to make money right away. So what's branding now? So ये दोनों आपस में correlate करेंगे. This is a relational relationship. We'll discuss this. This keeps customer forever. बंदा जाएगा नहीं, टिका रहेगा. I have clientele. उमर सर के साथ I think 7-8 years हो गए मुझे. 10 साल हो जाएंगे. करते करते. In the same way I have some clients 15 years से उनके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ. अब जाके complete strategies बना रहे हैं, marketing कर रहे हैं, websites कर रहे हैं, SEO कर रहे हैं. So because I am working on the branding rather than the marketing side. Build customer loyalty. Very important. For example, let's say, just to give an example, अमर सर के कोई प्रोडक्ट में दिक्कत आ गई, right? He runs a company called FEMA Carlo Frodini. Let's say कोई टैग या कोई सैनिटरी वेयर अच्छे से नहीं लगा, but the loyalty is there. The person will call, person will never ever think कि यार जो भी आपका प्रोडक्ट है वो गलत था. There might be some issues with the thing, but loyalty है कि जी इन्हीं से लगवाना है, कोई बात नहीं, दोबारा ये ठीक करवा देंगे. ऐसा बहुत बार होता है. A lot of times, even on Zomato, when the food product is not in a complete aspect, कुछ रह गया ना, 2 वड़ा पाव गए थे, 1 आया, you call Zomato because you know वो पूरा करेंगे, या तो आपको कैशबैक दे देंगे या फिर वो आपको दोबारा भेजेंगे. That's customer loyalty. उसके कारण आप आगे जुड़ते हो, उसके कारण आप आगे कंटिन्यू करते हो उस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ, दोबारा आप उसको ऑर्डर करते हो. Then in here a question is solved. In there a message is shared. There are 2 different points. क्वेश्चन का था, जवाब मिल गया, पर वहाँ पे एक मैसेज दिया जाता है. When we are talking about branding, visual identity is there. Obviously, we need to work on visual identity. Over here, you can run the funnel for it. I have been working with a lot of brands. मैं सही बताऊँ, सबकी ब्रांड गाइड आती है. ये कलर्स हैं, ये फॉन्ट्स हैं, ये कॉम्पोजिशन है, इधर लोगो आएगा, यहाँ वेबसाइट आएगी, ये फोन नंबर है. But when we are doing some marketing for campaign based, we can do some things here and there. हम visual identity को थोड़ा बहुत छेड़ सकते हैं, because marketing is for some specific people. Market is never for crores of people. You have to target some people जहाँ पे ये सब चीजें चल जाती हैं. So it's a short term goal at the end of the day. Branding is a long term goal at the end of the day. Now let's work towards strategies. The way I showed you the iceberg. One strategy says the permanent association strategy. ये स्ट्रेटजीज ही हैं जो मार्केटिंग को हटा के ब्रांडिंग की तरफ हमें लेके जाएंगे. सो टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ हम उसी के साथ जुड़ के रहेंगे. हेरिटेज ट्रस्ट इज ऑलवेज, सो हेरिटेज ट्रस्ट इज देयर, इमोशनल सिक्योरिटी इज देयर. द वे माय मॉम टोल्ड मी दातुन के बारे में, दैट्स इमोशनल ट्रस्ट. उनको पता है कि यार ये चीज़ इतने सालों से यूज़ करें था, आजकल के जवाब ने who started using the toothpaste. Then this is backed by Ayurveda at the end of the day. So this particular team members, they need to keep in mind permanent association is required. नहीं तो आप branding में नहीं जा पाओगे, because branding is forever as we discussed. So you have to link जो चीज़ कभी खत्म नहीं हो रही. Star Smile, social proof, lifestyle branding, trusted by influencers, backed by TV and film star. अगर आज let's say दीपिका पादुकोण के बारे में आपने बोला, if she is not relatable enough with our toothpaste, let's say after 30 years, at least we can hire someone who is backed by TV and film stars. So a permanent association is always there. Now Merident, doctor-backed credibility, unquestionable authority, fear-based trust, backed by science. All these particular toothpastes are being backed by something that goes forever. कभी खत्म नहीं होने वाला. Now this is the most important thing. According to my experience मैं बता रहा हूँ, fear-based trust is the best thing you can integrate in your particular brand. आप अभी भी करते ही होगे. आप लोगों पे ये ट्रस्ट बनाते होगे, उसका सामान ये ना वो खराब है, हमारा सामान इसलिए अच्छा है. Fear-based trust इसमें क्या जाता है कि केमिकल्स हैं यार, दांत खराब हो जाएगा आपका. So you're threatening them kind of thing, kind of कि आप ये प्रोडक्ट ना यूज़ करें. Trust in our product. Again, very important. So this is the heading, the permanent association. अगर आप brand strategies बनाते हुए first time permanent association बनाओगे, you have to follow it. उसी के साथ चलना है,
जब तक आप जा सकते हो वो चेंज किया, you have to change a lot of things. Moving ahead, the enemy strategy. अब ये strategy कुछ ऐसी strategies हैं जो बहुत brands use करते हैं. 10 minutes only. The enemy strategy. अब बहुत बार आप लोगों ने ऐसी strategy सुनी होगी, like I said, Apple की and Samsung की strategy. Security के नाम पे बहुत बहस होती है. Apple is fighting, Samsung is fighting. Position isn't enough. You need a target to attack. You need to attack someone. I have worked with a lot of marketing heads in this particular country. बताते नहीं है कैमरे पे आके, पर पीछे बड़ी बातें होती हैं. उस पे टारगेट करना है, उस पे टारगेट करना है. अगर किसी पॉलिटिशियन के पास डिग्री नहीं है ना, उसी पे टारगेट करना है. Because you have to make a strategy. This is the enemy strategy. अपना दुश्मन मानना पड़ेगा किसी चीज को. But today I'm not talking about to point someone as our dushman or enemy. I'm talking about something different. The biggest brand don't sell products; they sell a fight. If your brand isn't at war, you don't have a brand. You have a business card. At the end of the day, the topic of the masterclass is the brand warfare. You have to fight with a lot of contexts, a lot of competitors, a lot of ideology to make yourself stand out of the crowd, to put yourself in the first place. Now let's discuss this one also. So pick an enemy that exists in your industry. I cannot pick any enemy. A lot of IT companies are there, but I cannot pick any IT company. So who are the enemies at the end of the day? Enemy strategy says pick outdated norms. Pick bad customer service. Pick lack of trust. मेरे लिए एक चीज़ ने बहुत काम किया. I just grabbed one thing. मेरे बहुत clients यहाँ पे respected for being here. We are very good at communication. Saturday हो, Sunday हो, दिवाली हो, होली हो, मैं या मेरी टीम हमेशा फोन उठाएगी. 11 बजे कॉल कर लो, रात को 12 बजे कॉल कर लो. We are always there to reply you. Because that's what I saw in the industry. लोग फोन उठाते हैं. मार्केटिंग की कमी है, फोन ही चलते यार. I pick the phone always, every time, whatever it takes. कहीं भी आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, always reply. So that was the enemy for me. Not the IT company. That was the enemy कि लोग फोन नहीं उठाते किसी ने. So we cracked it. So real examples are Nike's enemy are inaction, excuses, laziness. Apple's enemy are complexity, obviously, slow innovation, and unsecure devices. So they picked those particular things, and they are doing pretty well based on this particular thing. सारे बंदे यही बोलते हैं कि Apple का फोन अभी खराब नहीं होएगा, security है, that's it. चलानी तो हमने Gmail ही है ना, Apple में भी वही है, Android में वही है, Facebook दोनों में, Instagram दोनों में. What's the difference? Because they are targeting, making these particular context, that particular context as an enemy. So enemy strategy always works. So one question for you: if your brand had to declare war on something tomorrow, what it would be? So time coming, but do think about it. If there are competitors, if there are people, if you are in conflict with other agencies or other companies or other banks, you need to decide किस चीज को target करें ताकि आपके पास कुछ chunk of customers आना चाहिए. Moving ahead, this is a villain strategy. Stand for something so aggressively that you divide opinions. Very important. Now, this particular team can say, we have to expose chemicals, right? We have to challenge the lab formulas, right? Because you are in Ayurveda. You have only few pointers. कि भी इतने साल पुराना हमारा ना चल रहा है. We have the tradition, we have this and that, but you cannot do anything else apart from that. Ayurveda का product है, मान लिया Ayurveda का product है, मान लिया इतने साल पहले चला, तो उसके अलावा आप क्या करें? You need to apply this brand villain strategy. सीधा युद्ध पे उतरना पड़ेगा. You have to tell उनके पास क्या है और वो अच्छा नहीं है. Chemicals नहीं चाहिए. ठीक है? Lab की चीजें नहीं चाहिए. Then what's next? For this particular thing, regular smiles are for regular people. Colgate is for regular people, kind of thing. ये regular चीजें use हो रही. You need to work on this particular context as a villain strategy to make it your personal choice, permanent choice. And for the doctors, obviously, very easy context. If it's not clinically tested, do you trust it? Again, a villain strategy. दूसरों को बदनाम करना, metamorphically कह लो, positively कह लो. Again, it is very important. Would you trust model or a dentist? अब यहाँ पे बोला ना सबने model चाहिए, अक्षय कुमार चाहिए, दीपिका पादुकोणे चाहिए, सबने बोला. अब डॉक्टर आगे कहते हैं, would you trust a model or a dentist? अब इसमें से सही चीज क्या है? Obviously dentist. जिसने पढ़ाई की है उसी को हम ट्रस्ट करेंगे. Now if they ran a campaign, if they put this as a winning strategy for branding strategies, everything falls apart. They will win for sure because they have this particular context.
या दीपिका पादुकोण पे विश्वास कर रहे हैं कि एक अच्छे PGI के डॉक्टर पे विश्वास कर रहे हैं? Getting the point? So wellness strategy is again something you have to implement. All right. Yeah, 5 minutes. Okay. It's okay. So the inheritance strategy is there. I will skip this one for now. थोड़ा time कम है, जैसे मैंने बताया. Cultural lock strategy is there. You have to associate yourself with the culture. Proudly Indian. आजकल हम देखते हैं भी बंदा कहते हैं देशभक्ति नहीं है, और XYZ political parties तो देशभक्त नहीं है, because the cultural lock strategy is there. Again, this strategy works pretty well for any product or the services also when you have to defy some inputs from the opposition. So you link yourself with culture. मैं अपना culture नहीं छोड़ सकता. At the end of the day, आप अपना culture नहीं छोड़ सकते, तो क्यों ना इसी के ऊपर बेस बना के दूसरों को downgrade करके दिखाया जाए. So cultural lock strategy is again important. So this is a smile of Bollywood protecting Indian families from day one. So Indian families की बात आ गई, emotions जुड़ गए. Now we are linked with Indian families again. Moving ahead. Now this is also very important. हमने ना competition को कभी खत्म नहीं करना. We need the competition. We need the industry. Whatever you have to work on is for the industry. You cannot disrupt the industry. You cannot say बंदे को जड़ से उखाड़ दे. एप्पल के पास बहुत पैसे हैं, वो चाहे वीवो को जड़ से उखाड़ सकता है, सैमसंग को जड़ नहीं उखाड़ सकता, but they have a lot of money. But you need the competition so that down the road बंदा convert होके आपका customer बने. आज जो वीवो यूज कर रहा है 20,000 का फोन, 15,000 का फोन, they will progress down the road, right? उनकी भी अच्छी सैलरीज होंगी, they will work on themselves, companies खोलेंगे, and they will reach a level one day जब वो कहेंगे यार हूँ मैं एप्पल लेना है, now I need to buy Samsung. So you need to have the competition. So you do not need to destroy the competition. You just need to be so good, they become irrelevant. Moving ahead. Now, finally, after all these particular, slides, we come down to the main question. जहाँ से I hope कई लोग सोच रहे होंगे यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए. What is a brand? Anyone? Yes, sir. When people come to you, how can Very good. Anyone else? Yes, sir. Anyone else? People remember after you. Very good. Brand is something which is serving the nation and bringing a change in the society. Yes, very good. Which people associate with. So let's say most color comes and they talk about the company. Yeah, for sure. See, in a nutshell, if they, means customer or consumer, have to compare, you have already lost. A brand makes them choose you instantly. ज़्यादा examples में ना जाते हुए, toothpaste के नाम पे Colgate ज़्यादा चलता है, adhesive के नाम पे Fevicol ज़्यादा चलता है, because the brand strategies are in this way. They have hammered our brain in such a manner that we recognize them a lot. So बंदा जाता कहता Fevikwik देना, बंदा जाता कहता M-Seal देना. Sir. Yeah. Surf देना instead of detergent देना. Definitely. Nirma is from day one, but surf came into play. बहुत लंबी उसकी study है surf की. The way they presented themselves in front of the people. Xerox is one of them for sure. So what is a brand? I hope everyone is clear. You gave the right answer. Now, what is branding? This is the final slide. What is branding? To outreaching your vision. Yeah, बिल्कुल. Among the customers, stakeholders. हजारों करोड़ों definitions हैं. Anyone else? What is branding? Brand पता लग गया? Branding. Yeah. Anyone else? Value for money also. See, India is a price-sensitive country. बहुत ज़रूरी है भी इतने में क्या मिलेगा और अच्छा मिले मैं इसको use करूँ. Then they will go for the word of mouth. Very nice answer. Anyone else? And while branding, you have to be very sharp. मैं आपको एक example देता हूँ. See, for example, let's say this is a gun, right? Let's say एक बंदूक है, भूल जाओ टूथपेस्ट है, यूज हो गया, खत्म हो गया. This is a gun. या फिर मैं अपने हाथ से इशारे करूँ. Let's say this is a gun. If I, समझन पड़ी ना? If I put it like this, what do you think? Am I a cop? क्या मैं प्रोफेशनल लग रहा हूँ? Right? If I put it like this, तो मैं क्या लग रहा हूँ? मैंने अपना हाथ ही नीचे रखा. I have not changed anything. मैंने सिर्फ हाथ नीचे रखा. अब मैं इसको थोड़ा ऐसे करता हूँ.
I'm a gangster. So see, only the tilt in my hand changed the complete perception. ये मैं 2 साल किया था, ये मैं kind of a trained professional, और मैं यहाँ पे gangster बन गया. बंदे के mind में सिद्धू मूसेवाला है, 50 Cent, Snoop Dogg, you know, बंदे वो mind में आने लग जाते हैं. Just the tilt of let's say 15 degree, everything changed. Now let me give you an example. Let's say मैं अमरिंदर सर के साथ बात कर रहा हूँ. No, ma'am, can you please stand up and call my name? मैं सर के साथ बात कर रहा हूँ, right? But she calls me. Then you can't talk Mohit. Mohit. See, I turned. Yeah, you associate with. No. I'm about to give some other example. You just call me Mohit. Mohit. I looked at her, right? Now you call me Mohit again. Mohit. You see what happened? It changed everything. Perception changed. मैंने पहले भी इधर किया था. Look at this. मैंने इधर देखा. मैंने जब ऐसे देखा, she's like, यार ये भी ऐसे देखा. Perception change. This is where branding comes into play. This is where everything falls apart. It is so sensitive. आपके एक इशारे पे या आपका ब्रांड आगे जाएगा या पीछे जाएगा या वहीं रुक जाएगा. ऐसा नहीं हमेशा गलत है, सही हो तो या वहीं रुक जाएगा, चीज़ काम नहीं करेगी. So you have to keep in mind. With this particular thing, here it is that I want to discuss. Branding is the art of making people believe they choose you when in reality you never gave them any another choice or any another option. So this is something that branding is. You give them no option. With this particular thing, I thank you everyone for being here. I hope any questions there. You can ask me, you can reach out to me. Our website is there already. We are ranking on a lot of particular keywords. You can search anytime and you can let us know if you need any services. My name is Mohit Sharma and I run an agency called Blacklisted. Thank you. Thank you so much, Mohit. I think that was an amazing session. And now we all know what is Blacklisted, who Mohit is, and what branding exactly is. So once again, how much did you like the session just by the claps? Call upon the stage Mr. Saurabh Kumar. He is also a brand. He is a brand for honey, Smile Key Honey. I would request him to come on the stage and felicitate Mohit. I request Vikram ji also to come on the stage. Mr. Abhinav Raj also. Let's have a photograph. मेरी जवानी की फोटो लगा दी इन्होंने. अच्छी बात है.